Principal, Vice Principal, Coordinator, Chief Guest, Associates, and all the gatherings present here. A very good morning to all. Today, we all are gathered here for an awareness program on what is law, why is it so important, and why does the government make laws. Before we begin, I would like to thank our today's chief guest, keynote speaker, senior advocate Mr. Kirti Bhushan and their associates, Advocate Prakriti Chambyal and Advocate Pallavi Sharma, who graciously accepted our invitation and joined us today. Task with the blessings of God, I would like to request our special chief guest. Flowers are our way to present here. I, Shruti Ujla, Principal, Indian Public School, welcome Senior Advocate Mr. Kirti Bhushanji, who is an eminent lawyer and belongs to the family of lawyers and is heading the third generation. It's an honor to be graced by your presence, sir. Thank you for accepting our invitation, for being here and guiding our students in every possible way. I also welcome Advocate Prakriti Chambyal, Advocate Pallavi Sharma, who are our special guests today. They are also the part of the journey and are making sure that every lawbreaker is behind the bars. I take this opportunity to welcome Anu Dogra Ma'am, Chairperson Rajiv Gandhi Memorial College and Indian Public School Kidzi Kathua. Welcome, ma'am. This school is so proud to have all of you here today. Welcome, everybody. Thank you. As to what is accepted in a society, who will share her views on what is law and why it is so important and why government makes law. Respect to those we have entrusted to enforce those laws. Respected principal, vice principal, and all gatherings present here. Laws. A law is a set of rules that are created by social or governmental institutions to regulate behavior. The law is important because it acts as a guideline as to what is accepted in a society. Without it, there would be conflicts between social groups and communities. The law allows easy adoption to change that occur in the society. Rules and regulations are provided to put a stop to confusion and dispute among our society. These are specifically planned so that our society may function smoothly and to secure others in our life.
10वीं कक्षा की छात्रा आज कानून और कानून के महत्व के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। मुझे आशा है आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारतीय संविधान में सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। कानून क्या है? विशेष कानून नियमों की एक व्यवस्था है जिसे अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है, जो राज्य की सरकार को नियंत्रित करते हैं। राज्य के अंगों के बीच संबंध और एक दूसरे के प्रति संबंध या विषयों का संचालन करते हैं। कानून का मुख्य कार्य किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना रहा है। 24 घंटे के लिए कोई कानून नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई अदालत नहीं। अब मुझे बताओ, 24 घंटे ज़्यादा दे दिए मैंने? चलो 6 घंटे, 6 घंटे भी ज़्यादा है। 1 घंटा दे देते हैं कि सरकार अनाउंस कर देती है कि 1 घंटा कोई कानून नहीं यहाँ पे, जो जिसके मन में आता है कर ले। मुझे लगता है मारेंगे नहीं तो जिसका बस चलेगा, क्योंकि कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है। कापियां फाड़ दोगे, ऑफिस में जाके खजाना लूट लोगे स्कूल का, जितनी फीस आपने आज तक भरी है सब लूट के ले जाओगे। और क्या क्या करोगे? और मैडम भी ऐसा भी करेंगी जो आपने सोचा नहीं हुआ, वो भी आपको फेल कर देंगी। आपने पूरा नंबर अच्छे लेने के वाले क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, लेकिन वो फाड़ देगी। पढ़ लिख लोगे, कमाई करना शुरू कर लोगे, तब एक भावना आपके मन में आएगी कि वो मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ये जो बराबरी का जुनून आपके अंदर सवार हो जाएगा, अगर तो विद इन द ब्रैकेट ऑफ लॉज, विद इन द परव्यू ऑफ लॉ फॉलो करके कानून को ईमानदारी के साथ मेहनत करके, अपने कर्मों पर विश्वास करके, अपने मुकद्दर पर विश्वास करके काम करते रहेंगे, तो गीता का वही बात कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो आप कभी ना कभी सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि किसी को लॉस पहुंचाकर मैं फ़ायदा ले लूं, या ऐसे शॉर्टकट्स अपनाएंगे जो कि कानूनी तौर पर गलत हों, कानून की अवहेलना करते हों, तो ऐसे चीज़ों से भी बचना है। क्योंकि सक्सेस अगर हमें चाहिए तो हमें अनब्लेमिश चाहिए, हमारे दामन पर दाग नहीं होना चाहिए। हमें कोई उंगली उठा के ये ना कहे कि इस बंदे ने चोरियां चकारियां करके सक्सेस कमाया है, इज्जत कमाई है या पैसा कमाया है। लोग हमें इस नाम से जाने कि इस बंदे ने मेहनत करके पैसे कमाए हैं, मेहनत करके अपना नाम कमाया है, और उसकी शाबाशी हो, सारी दुनिया उसको अपनी इंस्पिरेशन समझे। इस तरह से कानून के संबंध में अपने आप को गाड़ना है और कानून के तहत अपना काम करना है, कार्य करना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोबारा सोचें, 1 घंटे के लिए कानून व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए। अब सारी स्टेजेस पार करो। आज तो आप बच्चे हो, आप कल को आप बड़े हो जाओगे, कानून ख़त्म हो जाए, नशा करना शुरू कर दोगे? करोगे? ट्रैफिक रूल तोड़ोगे अगर रूल ख़त्म भी हो जाए? माँ बाप को धोखा दोगे कभी? अपने आप को धोखा दोगे कभी? नौकरी पाने के लिए कोई गलत काम करोगे? झूठी डिग्रियां लोगे कभी? मेहनत करोगे? मुझे लगा अभी भी नो सर ना बोलो, फ्लोरस करो। कानून को मानो, कानून व्यवस्था में रहोगे, ना आपको जुर्माना होगा, ना आपको कोई नुकसान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि बड़े ध्यानपूर्वक आपने सुना। आप सबके साथ बात करके मुझे मज़ा आया। हालांकि मैंने ज़्यादा बातें की, आपकी कम सुनी। अगली बार आपकी ज़्यादा सुनूंगा। बताया गया था कि जब आपने सड़क क्रॉस करनी है तो सबसे पहले लेफ़्ट देखना है, फिर राइट देखना है, फिर दोबारा लेफ़्ट देख के फिर सड़क क्रॉस करनी है। बताया गया था या नहीं बताया गया था? तो तब बताया गया था जब आपको उंगली से पकड़ के स्कूल में ले जाते थे, ठीक है, तभी बताया गया था। तो याद किसने रखना है फिर? ये आप सबने याद रखना है बेटे। तो सबसे पहला आपने कानून अपनी ज़िंदगी में जो अपने लाइफ में सीखा, वो ट्रैफिक का सबसे पहले रोड क्रॉस करना सीखा।
फिर कहाँ रुकना है, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में सीखा फिर आपने। उसके बाद आज तक आप कानून सीख ही जा रहे हैं, लेकिन आप सब कॉन्शियसली सीख रहे हैं। हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम ये सारे कानून मानते हैं सब कॉन्शियसली। मतलब हमारा कॉन्शियस चाहता है कि हम माने, इसलिए हम मान रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि हम कब कानून मान रहे हैं। लेकिन मैं ये पक्के तौर पे कहता हूँ, जिस दिन आप कोई कानून तोड़ना चाहते होंगे ना, ये तोड़ रहे होंगे, तो आपके कॉन्शियस में कुछ ना कुछ खलल पैदा होती है, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में आपने होमवर्क नहीं किया और मैडम से झूठ बोला हो कि मैम कल घर में गेस्ट आ गए थे तो मैं होमवर्क नहीं कर पाया। जब आप एक कानून तोड़ रहे हो तो आपकी कॉन्शियस हिट करती है आपको उस वक्त। तो इसीलिए कानून बनाया गया, ताकि लोगों की कॉन्शियस जो है वो हिट करने से बची रहे। और कानून का प्रावधान बनाया गया, सृष्टि की रचयिता वो है परमात्मा, इस संसार को बनाने वाला है परमात्मा, लेकिन संसार को चलाने के लिए तो परमात्मा चला ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिसिप्लिन पैदा करने के लिए, रखने के लिए, ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। और उसी तरीके से अपने अपने तयशुदा है, ये तयशुदा कानून बनाया। अब मैं बच्चों आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी दो बच्चों ने इस बारे में थोड़ा बड़ा बोला है यहाँ पे स्टेज पे, शायद आप उनको ज़्यादा पता है इस बारे में कि सोशल मीडिया पे कितना फ्रॉड हो रहा है, फेक आइडेंटिटीज़ के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको फिशिंग कहते हैं इसको, फिशिंग के साथ ऐसे ऐसे पेजेस आते हैं वहाँ पे कि आपको लगता है कि आपकी कोई लॉटरी निकल रही है, आपको कोई इनाम दिया जा रहा है, उपहार दिया जा रहा है, 100 रुपये की चीज़ आपको 1 रुपये में दी जा रही है, 10 पैसे में दी जा रही है। और इसको एलोरमेंट कहते हैं, जो हमारा बेसिक एक टेंडेंसी ऑफ माइंड है कि कोई चीज़ अगर हमें, खासकर अगर कोई बुरा ना माने तो महिलाओं को अभी कह दिया जाए कि बाज़ार में 20% छूट चल रही है साड़ियों पे, सारी साड़ियाँ लेने चली जाएंगी। तो सोशल मीडिया पे अगर 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में अगर बेचने की बात कर रहे हो तो सारे के सारे 1 रुपया देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो 1 रुपया आपका लूटा जा रहा है, वो 1 रुपया भी आपका लूटा जा रहा है। जब आपको ये पता चलेगा, जब आपका लूट हो जाएगी, जब आपका 1 रुपया लूट जाएगा, उसके बाद आपको समझ आएगी कि आपके साथ तो विश्वासघात हो गया। टाइम having together over this podium and this hall, the students who have spoken here about law, I have heard them keenly. They have used the very apt words during their conversation, and I can only say that I can applaud them. They have really described what is law and what is the necessity of law. But the words they have used are very heavy. बड़े भारी भरकम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर जनता बैठी हुई है, जो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए शायद ये थोड़े हैवी होंगे, उनके थोड़े से भारी भरकम उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया। सो आई वुड ट्राई टू यूज़ बड़े सिंपल से मैं शब्द यूज़ करूँगा। मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ अपने इस इंटरेक्शन में। तो बच्चों, सबसे पहले बताओ कि अपनी होश संभालने के बाद सबसे पहला कानून आपने कौन सा सीखा था, क्या सीखा था? तो नहीं याद आ रहा किसी को? हाँ, सबसे पहला आपने रूल, बिल्कुल बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया। क्या नाम है बेटे आपका? इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। Prosecutors, and how are they different from other advocates? बेटे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर दोज एडवोकेट्स हु डिफेंड गवर्नमेंट। These are government prosecutors, government advocates. Actually, before the abrogation of 370, in Jammu and Kashmir we had different setup of public prosecutors. Public prosecutors in Jammu and Kashmir, the then erstwhile state of J&K, we had the scheme of appointment of public prosecutor through nomination, and nomination was being carried by Law and Justice Department through government. But nowadays, these are gazetted officers. These fall under the Department of Directed Litigation. Directed litigation directly falls under the same Ministry of Law and Affairs. And my question is, what are the opportunities for girls in this profession? Her question is, what are the opportunities for women, for girls in this profession? Dear Manvi, I would like to give you answer with 2 examples sitting beside me. I have come along with my 2
female associates who are working under my guidance in my office. These are also advocates. We have total 6 numbers of judicial officers. 4 are ladies, 4 are females, and only 2 are male. So with this, out of 6, we have 4 female judges and only 2 male judges. You can imagine a big difference between male and female ratio in the judicial officers. Myself Rajbir Singh from class 10. I have a question that is there any competitive exam which we need to clear for getting admission in higher colleges or universities? In law? Only for law? Yes. Adhiraj? Rajbir. Dear Rajbir, Rajbir's question is there any competitive exam for securing seat in higher education in law? Is this the question? I have understood right? Yes, sir. So we have a CLAT, Common Law Aptitude Test, SLAT, Law Aptitude Test, and there is another combination of National Law School universities. Those conduct their own exams. Right, National Law School University, Delhi, they conduct their own exams, and the qualification for all this. There are 2 streams. One is called PG and other is called UG. UG is undergraduate program, PG is called postgraduate program. UG is the basic minimum qualification is +2, 10 +2 in any stream. Adhira, speak loudly. My name is Arvind. My question is, what kind of laws has to be studied to work for multinational companies? Thank you, Adhira. Adhira's question is, what kind of laws required to be studied for serving in multinational companies? So, besides securing the law degree, the basic law degree, you have to study international law, Monopolistic and Restricted Trade Practices Act, intellectual property which include copyright, trademark. So there are certain others also, Contract Act, and also basic law is to be read first. So beside basic law, these laws are to be expertise. Until and unless you expertise in these laws, you can't be a good lawyer in corporate sector and international multinational companies. And my question is, according to a consensus report of 2022, there is an increasing crime rate, every crime rate. And when we check this, India is a democratic country, but when we talk about law, it is not being used. Actually, in implementation, it's not being used. Let's talk about that Sushant Singh case. He was, सबने कहा था कि उसका जो है वो उसने सुसाइड करा है, बट अभी 2-3 मंथ पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करा था. उसने ये बताया था कि हिज रिब्स वर ब्रोकन, विच इवेंचुअली शोज दैट उसको ब्रूचुअली मारा गया था. तो मतलब इसका क्या वो है, इंडिया में इम्प्लीमेंट लॉ है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है. कोई भी केस हो, इट टेक 6 to 7 years वो जस्टिस लाने के लिए. सो वाई देयर इज सो मच टाइम? For answering this, the important quote is justice delayed is justice denied. So, important question before me, that why is that the justice being delayed? Rather answering this, I would rather put a question to all of you. Can I, can you, can she as an individual sit over the matter as a judge? Certainly not. This is not our job. अभी आपके सवाल में ही आपका जवाब था, आपने कहा लोग कहते हैं. लोग क्या कहते हैं, आई एम लीस्ट कंसर्न. What the judicial officer says, what the judicial officer passes the final verdict is important. Because लोग तो कुछ भी कहते हैं. लोगों में से कहने वाले ये भी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत नशेड़ी था. लोगों में कहने वाले ये भी हैं सुशांत सिंह राजपूत ने लोगों के पैसे देने थे. लोगों में कहने वाले ये भी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाज इग्नोर्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, और वो अपने आप में हीन भावना रखता था, उसने सुसाइड कर ली. इस इंपॉर्टेंट, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग बिलोंगिंग टू ए प्रोफेशन of legal fraternity, member of legal fraternity, I would restate my point of view that till the court says this is white and this is black, I have to believe that both are the colors. His family is not in law, find it harder to be successful in the field. Palak. Dear Palak has asked me a question about my thinking, whether is it
is it not hard for a person who doesn't belong to a legal family to become a lawyer? This is the question. I have understood it right. So, the meaning of hard is yet to be known by me. What is hard? Because I can find hard, but you can't find hard. There is perception. I may find it hard to answer your query while speaking over this podium. But perhaps some other person, maybe Prakriti Chambyal advocate, may come on this podium, she give it the reason very lightly. So the hard is a state of mind. What is hard is not known to me because Prakriti Chambyal advocate is having no legal background. She has joined this profession right in the year 2018. She is doing well in this profession. There are certain others also. So there is nothing like hard. Certainly an edge is there. I do admit and confess before you all that certainly there is an edge because I am the third generation lawyer. My grandfather was a successful lawyer in Kathua town. My father had been a good lawyer in Kathua. My eldest brother is practicing in Supreme Court and various high courts. I am the youngest son in the family. Even my nephews are lawyers. My eldest daughter is also undergoing law. So we have this compatibility in our family that right from the breakfast table till we dine together. This is a very political question asked by Aditi Sharma. Class 10th student is so aware of the fact that he has asked me very political question. Is the reservation for SC/ST good or bad? This is the question. So there is directive principle article 54 of Constitution of India, which said Constitution of India was enforced on 26th of January 1950. The framers of the Constitution, led by the leader Dr. B.R. Ambedkar, had a discussion in Parliamentary Affairs Committee for long 3 years with this topic. Is the reservation for SC/ST required for the newly built up India? Second, if required, then for how long? These were the two questions placed before the Parliamentary Affairs Committee. After long drawn 3 years consideration, the framers of the Constitution reached to the conclusion that the directive principle 54 would be placed or included in the Constitution of India, which says that the reservation for the undermined section of the society, which includes scheduled caste and scheduled tribe and women are also. Certain laws would be framed by the government of India, which would ensure the upliftment of this section. From my background, I am an infant Indian, done my higher secondary studies from Infant Jesus Higher Secondary School and then pursued my MBBS graduation from Sher-e Kashmir Institute of Medical Sciences, then internship from GMC Jammu and SMGS Shalamar, then worked in the Department of Emergency Medicine in GMC Rajouri as a JR, and then I cleared NEET PG this year and just going to join the Department of Orthopedics most likely in September. So I don't have much detail about this politics and civics. Still, I have a question. I think this question can help you in certain way. So I just want to know, the cases in the courts, it takes actually too long. And I know this is not in your hand. This is because actually what judges decide, that is the final decision, and that is almost upon the judge. But because of this long duration, the cases are just going on, and it can create a mental pressure on the people. Isn't On it? the litigants. Yeah, because on the litigants, why litigants only? If there is a divorce case, you can say that this divorce case, simple divorce case, runs for 20 years, 25 years, and life is just 4 months. That 20 years will not come back again, and the person will get old. That is not. That is also creating. I understood you. Yeah, because this is creating a broken family, social problem. So many things are there. You can. But I could gather there are two limbs of the question by Dr. Monica Sharma. Mohini. So these are two limbs. Perhaps one other limb I already touched, but not in this sense. There are two limbs that generally takes too long in a court proceeding, that ultimately when we get justice we get too old.
So justice delayed is justice denied is the maximum. So justice must not be delayed. It should be prompt, forthwith. So, Dr. Mohini, we have to see this other side of the coin because we can't jump to a conclusion while taking into account only one side of the coin. So there is a set procedure. If we are talking about a civil case, then we are guided by Code of Civil Procedure. From class 6 to 10th, for announcing the winners of slogan writing competition, I would like to call our chairperson, Mrs. Anu Dogra, ma'am, principal, vice principal, and our guests to please come on the stage and reward the winners. Class 7, Deepika from class 9. I would like to deliver vote of thanks on behalf of Indian Public School Kidzi Kathua. I am working as a coordinator with the organization, and today I would like to thank our chief guest, Advocate Kirti Bhushan sir, special guest Prakriti Chambyal ma'am and Pallavi Sharma ma'am. Today's session was very interactive and knowledgeable. So I hope most of the students have gained knowledge out of this lecture. So if any query is there as of now, you can raise your hand and sir will clear all the doubts. But I think it's already a very long session and we need to wind up. Thank you so much sir for gracing the occasion, and lastly I would like to thank media person for coming to the school on such short notice. Thank you so much sir. And